Hello, good evening, guys. Welcome to another episode of this podcast. We've had two really cracking and close games, and one of them being really, really close. The 36th match of the IPL played at the Eden Gardens between Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore, El Romero Part 2 this time, but this time at the Eden. And KKR has just managed to sneak in a win by 1 run thanks to Mitchell Stark's excellent last over. अंकित मैं आपसे शुरू करूंगा केकेआर की बैटिंग के बारे में फिल सॉल्ट वापस सॉल्ट रगड़ते हुए वुंड्स पे आरसीबी के I mean, the kind of start they wanted, from Phil Salt and Sunil Narayan, they could not get it because today I feel like RCB bowler, bowled really well, and we were cribbing and crying from first match. If they take a wicket within the power play, they are in the game, and today they got a wicket within the power play. So hence they have restricted the KKR within the 250. Otherwise, the score would have been 250 plus for sure. Krishna, Sunil Narayan, I think KKR had a good plan. Yash Dayal caught Kohli. Perfect match. I don't know. I mean, it's very amazing to even listen to people saying that they restrict people now in a T20 to 250 है. मतलब क्या बात कर रहे हो यार अंकित है मतलब restrict किया है तुमने 250 पे यार तुमने 250 रन खाए हैं भाई ये मान लो तुम मतलब 250 तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार मतलब 223 और 224 मतलब it's very good score है यार आप ऐसे नहीं बोल सकते we restricted KKR to that score. But yeah, I mean, see, it was on the cards, right? हम बहुत टाइम पहले भी यही बात कर रहे थे अभी भी हम यही बात करेंगे और बार बार हम यही बात करेंगे जब जब आरसीबी खेलेगा इनका नहीं हुआ भाई ऑप्शन सही और एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर आर लॉट ऑफ पजल्स दैट एक्चुअली नीड टू बी सॉल्व्ड एंड अनफॉर्चुनेटली यही है कि अभी मतलब द सीजन इज लिटरली डाउनहिल नाउ यू हैव गॉट 6th consecutive loss this season now after having lost the first, won the second, and now 6th consecutive loss, which in itself shows कि आपकी टीम में वो चीज नहीं है हम लोग इतना टाइम जो है इसलिए नहीं कह रहे थे कि मतलब आपने ऑप्शन ठीक नहीं किया ऑप्शन ठीक नहीं किया उसके बारे में भी मैं आऊंगा बट let's drill Ankit senior with some a little more questions. Okay, then we go straight to the pressing issues then. Shreyas Iyer 50 can take a back seat because he had a strike rate of 138. Anchoring innings, Rinku Singh again played well. Andre Russell and Ramandeep Singh coming and smashing bowlers all over the park. So the pressing issue, Mr. Singh, is that we did a little bit of research and the auction. Okay, let's just dissect RCB's problems and let's try to find a solution together while we have a little bit of fun. Right before the auction, Faf du Plessis said something like this. During the auction in Dubai, he said, we have players delivering, players who can deliver enhancing performances, especially at home. At home means Chinnaswamy. He also said he also said it is important to do your homework to play better at home. Chinnaswamy, you only one match, that too against Punjab Kings. Yeah, but people are saying the auction was not right, this was not right, that was not right. It's all about the mind game, I think they have taken themselves, कि नहीं हो रहा है यार उनसे ये विराट कोहली से फाफ डू प्लेसी कैसे बन गए आप मतलब ये चेंज क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ठीक है यार आई थिंक दिस इज गॉन केस बट दे ट्राइड रियली वेल टुडे इट वाज अ वेरी क्लोज गेम दे फाइट आई मीन दैट वाज रियली गुड आज अच्छा लगा ना फाइट वो देख के वो ये नहीं था कि आए और गए सच बताना करण शर्मा से कोई उम्मीद नहीं थी ना सच बताना उसने 3 छक्के मार दिए बहुत बढ़िया लेकिन कोई उम्मीद किसी को नहीं थी उसको यार, छोड़ भाई डीके को भी नहीं थी वो तो 19वें ओवर में स्ट्राइक भी नहीं दे रहा था करण शर्मा भी नहीं दे रहा था उसको या तो किसी को उम्मीद नहीं थी भी नहीं बताता अरे तू बैटिंग करता तूने बताया नहीं अरे तू वर्ल्ड टी20 में चला गया तो मैं कैसे जाऊंगा वो पुअर बॉलिंग थी मिचेल स्टार्क की
he was giving all in the slots. So ऐसा कुछ नहीं है कि it's not about we are not having a faith on Karan Sharma. He has done for the Yeah, Mumbai also when he played for yeah. Mumbai. उनका है रिकॉर्ड, उन्होंने रन बनाए, ऐसा नहीं है, बट वो 3-6 किसी को नहीं पता था यार कि वो लोगों को लगा कि मैच जा चुका है 19th ओवर में ही. मैंने और So कृष्णा yeah, ने ना इसकी एक रील पहले प्रेडिक्ट किया था केकेआर के मैच में कि मिचेल स्टार्क को कोई भी मार सकता है, और yeah. जेन्युइनली आज यही हुआ है, मिचेल स्टार्क को कोई भी मार के चला. Okay, coming back to another this thing about Faf du Plessis, he said that हमारी we are focusing on our batting. We want to improve the DNA of the team, and hence we are focusing on batting with three top players. K, no G anymore, but K, G, F, and then backed by Cameroon Green. That means these four people, Krishna, are there? They're looking at them to get big scores, at least in the power play. यार, मैं बता रहा हूँ. I think all this while we were thinking, ever since the first game happened, for RCB, we were all thinking कि नहीं यार, फाफ को शायद गलत ले लिया, फाफ को यहाँ पे नहीं खेलना है, और वो फंस गया है, he doesn't have the resources. But I think I just lately saw, after this game, a video on the Royal Challengers Bangalore social media, and it showed Hmm. that Faf du Plessis is at the core of deciding which players to pick and which not to. Yeah. Okay? And Yeah. I'll show you the stark difference between what was there earlier, जब ऑक्शन हो गया था, और अब किस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, एंड हाउ इट इज ऑल टुडे अ मीडिया गेम, जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी कहीं सारी गलतियों Hmm. की वजह से आप अपना Hmm. फैन बेस Hmm. खो जाओ. Hmm. So Faf du Hmm. Plessis, right after the auction, mentioned that after the last season, we felt that we needed to improve at home, just like how you mentioned right now. One Yeah. of the things that we did really well was to succeed away from Chinnaswamy, which is not happening this year. So we put our heads together, and what that looks like to be better at home, and how we can get better, in what ways we can improve. It's definitely the auction way to improve, and the process of the last 2 months has been solely around planning to be better at home, and the type of bowlers and batsmen that will be successful at home. We spent a lot of time talking about RCB and where we Hmm. wanted to take this franchise. It's Hmm. I think it's always really important that you do your homework and make sure you look at every area and talk it through. It's really a Yeah. strong top four in Virat, Faf, Patidar, and Glenn Maxwell. That's what Andy Yeah. Clark. And what are we getting to listen today? Is that we don't have many weapons in our bowling. So it comes Yeah. down to the batting. From a bowling perspective, we have lacked penetration. We have to get them, 2 or 3 down in the power play. Always feels like we are on the back foot after the first 4 overs. You have to Yeah. maximize the power play and be okay with losing 2 or 3 wickets. We are as desperate. That's why I am saying I am proud. Guys put their bodies on the line. We are just as desperate to get back to winning ways. We have an unbelievable fan base. The RCB chant is the loudest, desperately want to make our fans proud. Now, is this a marketing gimmick? Because someone from the media, or from someone, as a media manager, has definitely gone in and spoken to Faf that, listen, bro, we've lost 6 on a trot, and it's important that the fans do not lose their temper. Yeah. It is a Yeah. clear-cut Yeah. statement. आप पहले क्या बोल Yeah. रहे हो ऑप्शन के, Yeah. आप बाद में क्या बोल रहे हो? आप बोलो ना यार, हाँ चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई. कौन नहीं आके Yeah. बोल, नहीं बोल सकते ना आप आके. और फाफ था, So वर्चुअल कॉल में था, जैसे हम अभी बैठे हुए वैसे ही बात कर रहा था वो, उन लोगों से जो लोग hmm. ऑप्शन इन्वॉल्व हैं. with better internet, बेटर imagine. इंटरनेट. फिर भी गलती हो गई, लैग हो गया शायद, पता है, लैग हो गया इंटरनेट. वो कुछ और बोल रहा था, वो कुछ और प्लेयर समझा, लैग हो गया तो खरीद लिया गलती से. चलो, एनीवेज. बट अंकित, आई थिंक he has a fair point, and I'll give you your chance to speak after I make a few statements on, because I did a little bit of research saying what did Faf du Plessis say about his matches जब वो बैंगलोर में चिन्नास्वामी में, जहां पे उनको होम एडवांटेज गेन करना था, वहां पे मैच हारने और जीतने के बाद क्या बोला. ठीक है, पहले जब वो मैच जीत गए पंजाब किंग्स के सामने, तो बोलते हैं वी इन द ऑक्शन वी वाज टू फाइंड द डीएनए ऑफ द टीम आफ्टर विनिंग अगेंस्ट किंग्स 11. ही सेड इट्स अ डिफरेंट पिच. ठीक है, अपने ही ग्राउंड में, अपने ही होम ग्राउंड में डिफरेंट पिच. केकेआर के सामने आप हार गए तो बोलते हो अब टू पेस्ट पिच है,
जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आई तो पिच बेटर हो गई बैटिंग करने के लिए, चलो ठीक है। तीसरा मैच आप खेलते हो, आई थिंक राजस्थान के सामने आप हार जाते हो, तब आप बोलते हो वी नीड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन द ड्रेसिंग रूम टू पुट देयर हैंड्स अप, यू नीड पार्टनरशिप्स। Who are these strong characters that Faf is talking about? Isn't he one of the strong characters? Absolutely he is, but वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हैं. Either you just tell what is the reality, what is going on in the dressing room, what is going with him along with the franchise. He needs to just say this. Yes, as Krishna said, they are बेवकूफ बना रहे हैं बस अपने फैंस को, और कुछ नहीं कर रहे हैं. They are just putting the soil on their the grave, I would say. तो यार कुछ नहीं यार, ये just this year we would not say ये हमारा साल नहीं है यार. 16 साल से हमारा साल ही नहीं है. Every year they will come with a different excuse, I would say. Jerseys. यार तो नहीं यार, there's no use to, because यार कोई वो दिख के ही नहीं आ रहा कि आप फाइट कर रहे हो किसी मैच के लिए. You are not looking desperate also. You need to win. तो यार सबसे यार सारे there are other teams also, they are fighting. There are other teams also, they have the drawbacks, they have shortcomings, but वो at least वो एक दो मैच तो जीत रहे हैं. But over here it's chaos. The problem is that a few teams have shortcomings. SRH has shortcomings. I think that is also a lot of difference. Yeah. So moving, he also, in fact, very surprising, Faf du Plessis said, guys who take 7-8 balls to get in, the game does not allow you to do that anymore. Who was he talking about? Which is one guy who takes 7-8 balls to get in? Absolutely, your point is going to the towards the Virat Kohli, which is not. I did not take any names. Not. Dinesh Karthik also played slow today. I am just saying, Faf du Plessis said, guys take 7-8 balls to get in. 7-8 balls, 7-8 balls. When he said that time the match was different. He did not say today. People take a 7-8 ball. You are talking about the previous his post match presentation. अंकित मुझे एक बात बहुत सिंपल, ठीक है, तो वो सब छोड़ दो यार, तुम वो सब छोड़ दो. तुम 137 for 2 थे यार, 137 for 2, ठीक है. वहां से तुम्हें 100 रन भी नहीं चाहिए थे और जीतने के लिए, 90 या 85 कुछ ऐसे चाहिए. वहां से कैसे हार सकता है आदमी यार 10 ओवर में? वो भी नहीं हो रहा है चेस. वहां से करण शर्मा से कैसे उम्मीद लेके आ सकते हो आप? भाई कोई उम्मीद नहीं थी. ये बात गलत है. I mean, कोई उम्मीद नहीं थी किसी को. I think people would have, being as a fan, they've started leaving the ground also. But when they realize, oh, what is happening? We need to be back in the ground. So yeah. Okay, now since we've talking about averages and you took Virat Kohli's name, I did not. I to all fans, I'm a Virat Kohli fan. I did not, but you guessed it right. Virat Kohli's wicket caught and bowled Harshit Rana when he was playing on 18 of 7 balls on a legal delivery. So let's talk about, were you watching the match when he got out? What was your thought? I need to ask first this question to you. What was your thought? As an emotional cricket fan? No. Don't add emotion. I just wanted to understand what was your thought when you saw that. My thought was not out. Okay. Yes. But now then you have technology. But then technology has come into picture by the BCCI. The new Hawkeye technology shows that Virat Kohli is out of his crease. The ball is dipping and he has to walk. So yeah, same happened with Andre Russell, but he was standing inside the crease. RCB did not celebrate. It was clearly no ball. Coming to the Virat Kohli's wicket. Catch out hua. Nobody celebrated. Everyone, on the field felt like it was a no ball. But yes, as you said, rule is a rule. Even Faf has said, rule is a rule. But let's debate this. अगर आप ठीक है, आप क्रीज के बाहर खड़े हो, हाँ जी, why you stand out, outside the crease to cut the swing. और वो पावर प्ले ही चल रहा था. हर्षित राणा स्विंग करता है to cut his swing. That's the reason Virat Kohli was standing outside the crease. That's a batsman choice. Correct. That's a batsman choice. He can stand wherever he feel like. Correct. इसका मतलब He's right. No. He's not saying as per rules. He's not saying as per rules. Krishna, wait.
wait. Wherever batsman want to stand, he can stand before the delivery. ठीक है, कल से मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, हेड स्टार्ट करेगा, एसआरएच का मैच चल रहा है, हेड स्टार्ट करेगा क्रीज के, बाई चांस मैंने देखा, बीइंग एज अ बॉलर, बाई चांस मैंने देखा कि वो क्रीज के बाहर खड़ा है, मैंने बीमर मार दिया, I'll take an advantage. What you will say on that? I'll take an advantage of that. I'll crib and cry. You know, this is how you. Now it's a question mark for the future. I'm telling you, it's a question mark for the future. So Future okay, reference. okay. Krishna, my question to you: Kohli's waist height was measured at 1.04 meters. 1.04. ठीक है? And if the ball was coming, it would have been 0.92 meters. मतलब वो जितना भी डिफरेंस है 8-12 सेंटीमीटर का, वो फर्क रह गया, एंड वही फर्क रह गया. As per ICC rules, as per all Hawkeye technology and everything, that ball would have been crashing below his waist. He was standing outside the popping crease. That's not allowed. भाई एक चीज जरूर है, ठीक है, ये मैं चीज बोलूंगा कि कोहली का कमर हमारा करियर बना देगा भाई, ठीक है। हर किसी के बारे में बात कर रहा है, न्यूज चैनल में कल भी, मतलब न्यूज़पेपर में यही है, यही हेडलाइन आएगी कि क्या थी विराट कोहली की कमर, कितनी थी उसकी मतलब हाइट, एंड ऑल ऑफ दैट विल हैपन, ठीक है, बट विल नॉट गो देयर। डाइट चेंज हो जाएगा, उसका डाइट चेंज हो जाएगा, पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोबेबली क्या कहते हैं, कुछ रील्स में वो भी आएगा, कोमोरिया वो भी आएगा। बस, बट ठीक है, मैं एक बात बता दूं भाई, नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑन द विराट कोहली डिसमिसल, नवजोत सिंह सिद्धू हैज मेड अ वीडियो ऑन ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, ही इज टेकन दैट एफर्ट, एंड यू नो व्हाट he said if a batsman is 6 feet tall, we have given him an allowance of 7 feet while making this is like legalizing a beamer. In my time, a bowler would apologize to bowl one. Point of impact is 1.5 inches above the waist, and VK is 6 feet away from his crease. Has it dipped enough? Now the benefit of doubt must go to the batsman. Change for the betterment is progress, and he was not out. Harsha Bhogle mentioned, thank God for technology, took away all allegations of bias and favoritism, and just as well that the players were measured before the start of the tournament, something that a lot of us were waiting for. So it wasn't about the umpires at all, but dispassionate use of technology. आखिरी बोलूंगा, Irfan Pathan said that BCCI has measured the body height and waist height of each player in IPL 2024. So those data have been used here. So technology can't be so wrong. And it was clear out. But Virat Kohli's behavior is not acceptable. मैं नहीं बोल रहा हूँ, इरफान पठान को. We'll come to the behavior part later, Ankit. One more thing before it happens. एक बार ना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और शादाब खान, शेडी जो उसको बुलाते हैं ना, वो बैटिंग कर रहा था. ऐसे ही बीमर आया था, ऐसे एक बीमर आया था, वो स्टंप पे लग के आउट हो गया था, लेकिन उसे नॉट आउट दिया गया था. क्यों पता है? Because he was within his limits. I mean, he was within the crease. It's just, you know, people want to take an advantage and say this, but for us, when you see with a naked eye, I do understand we need to use the technology, but technology also cannot be right accurate at 100%. यार उसने अपना बैट भी देखना कहाँ पे स्ट्रेच किया था to play that, and being as a, you know, if you see that was slow ball, and slow ball cannot dip. I don't understand how can slow ball can dip. स्लोअर बाउंस जो कमर के ऊपर है वो कैसे डिप कर सकती है यार? मेरे को एक सिंपल सा ग्रेविटी, जिसने साइंस पढ़ा होगा, जिसने सब कुछ है, वो मेरे को समझा दे. एक अगर मैं स्लो बॉल फेंक रहा हूं तो वो उसी लेंथ पे जाएगी, वो डिप नहीं करेगी. तो उसमें इसमें एक बंदे ने बोला भी था कि चेंज हो गया किंग का टाइम पे सेफ वाला रूल चेंज हो गया. नहीं, there is logic to this. यार there is a logic. यार तू बता कैसे तू बता है मॉइस्चर, विंड, अब ये सब कैलकुलेट नहीं करते हो टेक्नोलॉजी, ये सब भी अफेक्ट करता है बॉल की लेंथ को, बोला उसने बेचारे ने यार. बट ओके, माय वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन अंकित, अगर यही बॉल कोई नॉट of a stature player, let's say someone like Rajat Patidar got it, or Ricky Bhui got it, would the media have created the same, oh my god, or no? Absolutely no.
एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज विराट कोहली ने अपना वो स्टैचर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी भी आया था, वो भी बहुत हाइप हुआ। ऋषभ पंत ऋषभ पंत was in his peak form, he does the same, it was hyped. So it was not, behavioral issue कि उसने, he just went and asked the question, he showed his dissatisfaction. I'll tell you one thing, रिचर्ड कैटलबोग ने ट्विटर पे किया 39 टाइम्स, ट्वीट किया 39 टाइम्स, Sachin was given wrongly out, no review, no DRS. Sachin never complained, never argued with the umpire. If the technology was there, he would have not asked the question. उसने नहीं He would पूछा have not asked this question. ऐसा नहीं था कि नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी पर कम It was never there. No, इसकी भी टेक्नोलॉजी DRS was not there, review was not there. was not there, of course, and there was no scope of asking any questions, right? आज के डेट में आप क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि आपके पास डीआरएस है, आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप आउट हो कि नॉट आउट हो, आप अपना एक परसेप्शन बना लेते हो ना यार। उस टाइम पे तो you have given the answer. So you have given the answer. तो इसका क्या मतलब? given the answer. नहीं तो इसका क्या मतलब है कि अंपायर्स हटा दें हम? एक मिनट अंपायर हटा देने। एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ, तेंदुलकर was the first batsman in world history to be given out by a third umpire, by the way, on a run out. Yeah. Correct. He walked. Adam Gilchrist was not given out, but he knew he nicked it. He walked, and not once but twice. Okay. Talking about umpiring, कौन था third umpire? Michael Gaw. ठीक है, Michael Gaw is a part of the elite panel of ICC umpires, elite, with a record of 95.1% of his decisions have been upheld. मतलब review लिया player ने और review same ही रहा जो umpire ने decision दिया, they stuck to it. Okay. So previously also शर्मा बैटिंग कर रहा था, बॉल बैट और पैड के बीच में थी, सबको पता था नॉट आउट है, नहीं लगा है, कमेंटेटर्स बोल रहे हैं माइकल गॉ ने आउट दिया था। इससे पहले एक बार टिम साउदी बॉलिंग कर रहा था टेस्ट मैच में, उसने ओली पॉप को इंस्विंग में डाला, प्लम एलबीडब्ल्यू, प्लम मतलब एक आंख बंद करके देखेगा तो भी प्लम लगता है वैसे एलबीडब्ल्यू। माइकल गॉ ने डिसीजन ओवर क्यों किया, डीआरएस लिया, देन So yes, Dwanil, you have the answer. Every time they cannot be right. Yes, it's a debatable कि वो आउट था कि नहीं आउट था यार। वो सिचुएशन पे यार, विराट कोहली इज अ वेरी बिग विकेट, एवरीवन नोज। So yes, he has all the rights to ask the question. There was no behavioral issue. There is no behavioral issue यार। कितनी बार रोहित शर्मा ने नहीं पूछा यार, वो डस्टबिन पे मुक्का मारते मारते ग्लव्स गिर गया, उसको लगा बॉक्सिंग ग्लव है, वो देखा अरे क्रिकेट का है तो यार वो डस्टबिन उठाने नहीं आया, ठीक है, वो डस्टबिन उठाने नहीं आया, वो फेंकने भी नहीं आया, गिर गया, वो ग्लव उठाने आया। मैंने बोला डस्टबिन नहीं बोला, मैंने ग्लव्स उठाने आया, वो ग्लव्स उठाने आया था वापस, और उसने बैट भी पकड़ा। He can ask the question. He can ask the question. Yes, he can show the dissatisfaction कि भाई मेरे को नहीं सही लगा, मैं पूछूंगा। You have all rights to ask these questions with umpire. Yes. अब उसमें ऐसे क्या यार, एवरीबॉडी नोज विराट कोहली का वो है, वो ऐसा नेचर, वो वैसे ही पूछता है। मान लो वो किंग इज द किंग, वो सहना तो पड़ेगा आपको, रन चाहिए इंडिया को, जिताना भी है तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ओके, so final answer, Ankit Singh, no ball or legal ball? It was a no ball as per Wasim Jafar. It was no ball as per Ambati Raidu. It was no ball. Navjot Singh. These are the cricket experts. यार, they have seen. यार भाई मत मान। ठीक है, मतलब legal delivery. Okay, you say legal delivery. Legal delivery. No, okay, I will not say. No, I will not say it's a legal delivery. मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, मैंने तो पढ़ा है भाई, लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, मैं कुछ नहीं बोलेगा। So it was a no ball. Sorry, not legal delivery. It was a no ball. Correct? Yes, it was a no ball. Absolutely, it was a no ball. Krishna, by all means, honestly speaking, it was a no ball. It was not a no ball. Sorry. Yes, you said it. You said it. नहीं, एक सेकंड रुको। मैं ये कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, नो बॉल वो आउट था, बहुत सिंपल सी बात है। वो बाहर खड़ा हुआ था क्रीज पे, वो बहुत आगे खेला यार वो अपनी बॉल को, तुमने खुद बोला अभी अपने डिफेंस में, वो बहुत आगे खेल रहा है, और ऐसा यार इम्पैक्ट ऐसा खेला यार, ठीक है, सुन मेरी बात, लेकिन वो जो ट्रेजेक्टरी दिखाया है वो इम्पैक्ट भी दिखाना चाहिए ना कि वो पार जाके तब डिप कर रहा है। देखो नॉट लाइक मेरे को बनाता है आईसीसी नहीं, बीसीसीआई ने बनाया। दिस इज नॉट
this नहीं rule नहीं, has not been made by बीसीसीआई ने ICC. सिर्फ हॉकाई लेके आया है, हाँ, रूल हॉकाई लेके आईसीसी आया ने है, बनाया है। रूल आईसीसी का है, टेक्नोलॉजी मेरे बीसीसीआई को का। एक ही सवाल है, ये वही, मैं मेरे को एक ही टेक्नोलॉजी की सवाल बात कर है, रहा हूँ, द टेक्नोलॉजी इज एक रॉन्ग. मिनट, अरे एक मिनट, चाहे बॉल लीगल था या नो बॉल था, मेरा एक ही सवाल है, जब ऑस्ट्रेलिया में उसी बॉल पे छक्का मारा था तो इधर बैठ के सब घूम गया। स्लोअर वन ही था ना अर्चित राणा का, इधर भी जा नहीं नहीं, सकता था ऐसे। वो भी नो बॉल ही दिया गया था ना, नो बॉल दिया गया था कि नहीं? हाँ वो या नो ना? बॉल दिया, वो नो बॉल तो दिया, फिर बट वो बहुत हाँ ऊपर था यार, वो जेन्युइनली बहुत ऊपर हाँ था। हाँ, बहुत ऊपर था भाई, वही है ना, वो बहुत ऊपर था. ओके होल्ड सॉरी, के पहले था सॉरी इसलिए गाइस, वो ऊपर था। वो किंग वहां पे, साइज अच्छा हाँ, ऊपर वहां था। पे बीसीसीआई का टेक्नोलॉजी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब वो टाइम पे नहीं था. हाँ सॉरी, या यू आर राइट. Okay, we're just pulling your leg, man. We also want to see the spirit of the game being upheld by not arguing with umpires. Uh, moving on, there are other players who played really well. I think Rajat Patidar now has come in form, so it's a good sign for next year if they take him. And Cameron Green continues to disappoint RCB. Dinesh Karthik probably could have played a little faster, maybe not. अगेन सुनील नारायण, फाफ डुप्लेसी ने बोला कि यार सुनील नारायण का वो एक ओवर जो था वो पूरा गेम चला गया, एज पर फैक्ट। Yeah, I यू mean, सीइंग he's दैट? a mystery spinner. Yeah, he's a mystery spinner. I mean, जब रोमन पावेल बोल रहा है उनका वेस्ट इंडीज का कैप्टन, I will whisper in his ear to please come to play for World Cup. So yeah, there's nothing to say much about it. आरसीबी के टाइम पे सब मिस्ट्री स्पिनर हो जाते हैं भाई, मेरे को समझ में I नहीं have आता। never seen someone so heartbroken in my life. I have Okay, Krishna, never you tell me, when he was last, you know, hit by six in Kolkata ground, which match you have seen? In which match? Not today's match. Sunil Narayan in this IPL I am at sure that Kolkata there are ground. games यार, every bowler goes for a 6 or a 4. आई थिंक लास्ट मैच में ही Today, गया था राजस्थान में, राजस्थान के साथ जब मैच था, ये लोग चेस किए थे इतना सारा, लास्ट मैच ही गया था। Roman Powell took him यार वो on. मिचेल Roman स्टार्क Powell ने था. बोला I will take हाउ Sunil कैन, Narayana अच्छा on. मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा बात, 223 और 224 में कितना डिफरेंस है? एक रन का डिफरेंस है। राजस्थान रॉयल्स कर लेता है चेस, ठीक है, एक आदमी जो अकेला एक टांग पे खड़ा है, उससे भागा नहीं जा रहा, वो 100 मार के जो है जिता देता है। आप 137 फॉर 2 थे यार, आप यार ये कहने 137 की फॉर बात 2 है, थे, ऐसे ठीक है. बस ग्रीन जर्सी को मतलब डिफेंड करना चाह रहे हो और कुछ नहीं है। अभी बोल दो कि मतलब इस साल भी ग्रीन जर्सी से नहीं हो पाया। Anyways, tough match, tough match. Yeah, in a lot of ways. So now, what's the plan? Plan is very simple. अभी Win. अभी तो जितने प्लेयर थे सबको ट्राई कर लिया प्लेइंग 11 में डाल डाल के। नील प्रभु दे सूर्य प्रभु देसाई को भी ले लिया आज। कहता तू सुयश प्रभु तू भी खेल ले भाई। अब क्या एंडी सबको प्लार आएगा चांस बैटिंग मिलेगा, करने, पावर प्ले में सबको एंडी प्लार बैटिंग कर रहा है। सबको चांस दे 11 दिया भाई, तो भी नहीं हो रहा है. Everybody has पृथ्वी tried their मिश्रा luck, नहीं आ but गया, there's पृथ्वी no. मिश्रा तो नहीं आएंगे बैटिंग करने, तो वही बचा है। अरे उनको बोलो भाई ढंग का ऑक्शन कर ले, बैटिंग छोड़ दे, जो काम जिसका है उसके ऊपर छोड़ दे. लॉकी फर्ग्यूसन को भी वापस ऑक्शन चले उसका जाना काम चाहिए नहीं इंग्लैंड है, T20 यही वर्ल्ड कप प्रॉब्लम से है, पहले। ऑक्शन उसका काम नहीं है। एंटी प्लार को बिठाओ वहां पे, वो किसी और आदमी के साथ बैठा था वहां पे। तो ऑक्शन उसका काम नहीं है भाई, उसका काम है पैसा देना, बजट देना, कि इतना प्लेयर है, इतना पैसा है, लो इसको, जो है वो करो। उसका नहीं है काम, यही तो मैं कह रहा हूँ तब से। एक थोड़ा बहुत अच्छा स्पिनर था, उसको भी ट्रेड कर लिया मयंक डागर से. अरे क्या क्या खा के क्या पी के उन्होंने स्टार्ट किया था ये साल, आई डोंट अंडरस्टैंड. अह, ठीक है। Anyways, moving forward, I think tough game for RCB. I think KKR भी एल रोमेरो बुलाना बंद कर देगा नेक्स्ट ईयर से। बढ़िया नहीं क्या एल रोमेरो, भाई तुम लोगों ने एलएसजी के साथ एल रोमेरो करते हैं। एल ऐसा प्रिमेरो. जी एल सेट कि प्रीमेरो। यार हाउ कैन, मतलब मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? मैं पीछे नहीं रह सकता। अगर कोहली लड़ेगा अंपायर से तो मैं भी लड़ेगा अंपायर से। तुम लोगों ने देखा वो चीज? हाँ आज वो और चंद्रकांत पंडित लड़ पड़े। चंद्र, जब मैच खत्म हुआ तो मुझे लगा
कि चंद्रकांत पंडित जिस उसमें जा रहा था, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, देखो स्टार को कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, अभी और गेम्स बचे, अभी और गेम्स बचे, अभी स्टार को कुछ मत कहना। 24 मुझे करोड़, मालूम है कि 24 मतलब करोड़। आज जीता जिताया मैच वो हरवा देता, अभी बस हो गया था, काम हो गया था, पर उसको कुछ मत कहना, अभी कुछ मत कहना, 24 करोड़ में लिया है। वो उस गुस्से में जा रहा था यार, और वो अंपायर की तरफ जा रहा था या स्टार की तरफ जा रहा था वो मुझे नहीं पता, बट नहीं इट नहीं, वाज। स्टार तो इंटरनेशनल प्लेयर है यार वो। उनका दे हैव अ गुड टीम बॉन्डिंग, कृष्णा, दे नॉट with their team backing them up. They want to continue in the same vein as per Shreyas Iyer. Anyways, moving on to another match which could have been a thriller, but Rahul Tewatia avoided that. It was Punjab Kings versus Gujarat Titans at Mulanpur. GT has made a comeback, win by 3 wickets, chasing a low total. Anything on Punjab Kings, Krishna? अगेन यार पंजाब किंग्स गेव अस अ वेरी गुड गेम ऑनेस्टली, वो भी क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 90th ओवर तक तो खींची गया यार जैसे तैसे, जस्ट जस्ट एन ओवर टू स्पेयर। बट आई थिंक यार इस पंजाब के टीम के पास ना थोड़ा बहुत कैरेक्टर दिखा, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर पंजाब टीम्स इन द पास्ट दैट वी हैव सीन, जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, इतना फाइट नहीं देते, इनके गेम्स इतने इंपॉर्टेंट या फिर कोई कंसिडर नहीं करता, इतनी इंटरेस्टिंग कंसिडर नहीं करता, बट आई थिंक दिस टाइम देव जस्ट बीन अनलकी टू नॉट बी एट द राइट साइड ऑफ द रिजल्ट। But it's also because Yeah, the other teams have also come in and given good performances, yeah. especially क्या कहते हैं even the spinners जो आज खेले खेले from GT, and of course Sai Kishore is one of the एक बहुत अच्छा पिलर था। What do you think about him दोनों, क्या लगता है? Okay, so I have a little story to share with you guys about Ravi Srinivasan Sai Kishore, 27 years old from Tamil Nadu. Okay. And he has this inner voice within him. Okay. And he listened to his inner voice and dropped out of engineering to join cricket. Most of them remember Sai Kishore from 2016, जब TNPL में पता है उसने लड़ाई किया था जगदीशन के साथ, और अश्विन अश्विन आ गया था, मारा मारी करने वाला था. Cut to 2021. Okay. He describes himself as Pathiya Karan. That means strange. Okay. 2021 वेस्ट इंडीज सीरीज में वो रिजर्व प्लेयर में था, वो बायो बबल में था, सीरीज खत्म हो गई, सब अपने अपने घर जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, ये करते हैं. इसने अपने माँ बाप को टेक्स्ट भेज दिया कि मैं कोई रिमोट जगह पे जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, मैं नहीं आ रहा हूँ घर पे. ठीक है, ये टेक्स्ट कर दिया. सो ही वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट टू बी बाय हिमसेल्फ एंड मेडिटेट. And I quote, when I opened my eyes, there was a monk for company. Once we finished meditation, we walked for a few hours where he shared about his journey. He had by then walked more than 1,500 kilometers. It was stunning. And I joined him for a couple of hours. वो एक monk के साथ walk पे चला गया. ठीक है? He spends a lot of time going to temples where he sleeps on the floor, uses his elbow as the pillow, cleans it, serves food there. And he says, there is so much calmness and positive vibe over there. I like such places just like our dressing room. And he has shared his dressing room with Dhoni and Fleming in CSK. And he learned it there, where he said that I have learned to prioritize process over result. Okay. And this is not the end of it. Okay. In the Ranji Trophy team that he was captaining, he also plays the guitar. So he doesn't call anyone for a team bonding activity. He plays the guitar, he plays Ilai Raja, plays A.R. Rahman, plays Arijit Singh, and everyone just gather around that. You should go to his Instagram and check out the songs that he sings. Okay. So Sai Kishore is a man who's tall. He has this bunch of curly hair. If I describe it, it looks very chaotic, but he has method to that chaos, and that's what his hairstyle resembles. A sharp face. He puts his goggles out, and every time he takes a wicket, he just outstretches his arms, allows the wind to touch his hair, and just thanks Almighty God. That's Sai Kishore, a real gem of a left arm spinner that this country is missing, and a leader that has learned so much from Fleming and Dhoni. And more so, in fact, आज भी उसने post match presentation में क्या बोला, for about good 20-25 days, I was actually itching to go out there and perform. And Ashish Nehra actually gave me the freedom. Now look at the character. He's had multiple, issues in the past where, he's had tussles with Ashwin. He's had, tussles even with his Ranji coach, for that matter. So he's a character. ठीक है, और वो ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब आसानी से किसी बबल में फिट हो सकता है. And for that kind of a guy to come in, and for that kind of a guy to come in and fit in into the CSK side, and then we do not give credit enough to Ashish Nehra
for bringing out the best in him and utilizing him. सीएसके का इसलिए मैं कह रहा था, जीटी और सीएसके एकदम सेम तरीके से मतलब पैरेलली चल रहे हैं जिस तरीके से, और जीटी ने पूरा उसको ऑब्जॉर्व कर लिया है उसके पूरे कल्चर को, एंड दैट्स व्हाई ही फ्लरिशेस देयर इन दैट सेटअप, एंड हेंस he gave credit to Ashish Nehra today at the post-match presentation that it is Ashish Nehra who brought out the best in me today. Or it was very heartening to see side show. And also Shubman Gill for that matter, जिस तरीके से उसने अपने spinners को use किया है यार, you know, for the 12 overs that he used his spinners, I think Shubman Gill is developing as a captain धीरे 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 धीरे, and we are getting to know about that just because of the results. But trust me, dude, there is something that Gary Kirsten is doing. There's something that Ashish Nehra is doing that will develop Shubman Gill into a great leader in the future. I have this gut feeling. He'll definitely take the India reins for sure if he continues this one day or the other. Maybe once, you know, Rohit Sharma is gone, or maybe KL Rahul also is gone. वो चीज आएगी इसके पास, और उस चीज को वो कैसे यूटिलाइज करेगा, उसके पास एक बहुत क्रिकेटिंग ब्रेन है. कभी देखा है जब वो बैटिंग करता है ना, बहुत फोकस्ड होता है. ही इज नॉट स्माइलिंग, ही इज नॉट गिगलिंग, ही इज नॉट एनी फेशियल एक्सप्रेशन, इज जस्ट स्टोइक. वो स्ट्रेट फेस से बैटिंग करता है. बट अंकित, राहुल टेवटिया ने वही चीजें की है जो राहुल टेवटिया करता है. क्या अगले साल आरसीबी राहुल टेवटिया को लेना चाहेगी? अगले साल तो बहुत उलटफेर होगा यार. धोनी जाएगा, रोहित शर्मा सीएसके आएगा, नया फेस वैल्यू मिलेगा. तो अगले साल तो बहुत कुछ होगा यार. और अगले साल फिर से प्रथमेश मिश्रा आएगा और नई टीम खड़ी करेगा. So yeah, there's, you know, let's not talk about the next year. We have to live in the moment. But you know what, I feel like Shubman Gill has taken a lot of pressure for as a captain, which is affecting in his batting also. Yeah. I mean, if this is kind of he is performing, then for sure the question will be there in the T20 format for him as a opener. As a opener. And do you think Rahul Tewatia is someone who could probably make it for the this thing? To India cut? No. Yeah. No, he will not, for sure. There are other people, you know, they are giving more result rather than, you know, picking up. Yeah. Great. Moving on for tomorrow's match, again, another cracker. I have Rajasthan Royals versus Mumbai Indians. Ankit, कुछ सवाल, कुछ thoughts? दिल बोल रहा है राजस्थान, बट दिमाग बोल रहा है मुंबई इंडियंस. Yeah, I think Rajasthan Royals will definitely take a game from Mumbai Indians hand. And do you see any changes happening in the Mumbai Indians side? We can bench, you know, Akash Madhwal, and we can brought Arjun Tendulkar. यार वो 6 कितना सीजन से तो बेंच गरम कर रहा है यार. उसको लास्ट ईयर यूज किया, उसका थोड़ा सा झलक दिखाया, फिर उसको बैठा दिया. इस साल 7 मैच हो गए यार. वो क्यों है? वो कितना सीखेगा यार, कितना सीखेगा. योगराज से ट्रेनिंग लेके आ गया भाई, अब क्या चाहिए. यू नो, आई डोंट फील लाइक यार इधर यू रिलीज हिम लास्ट मिनट में, तुम बैट करके पता है वो उठा के उसको 20 लाख में तुम ले लेते हो. उसमें भी आशीष नेहरा उंगली करता है, आशु भाई उसमें भी उंगली करते हैं, पता है उसके उसमें. मेरे को लगता है अगर आशु भाई होते उनकी जगह तो वो आशु भाई खिला लेते. बट यार ही नीड, यार उसको चांस देना चाहिए. उसने पता, इसी वजह से उसने पता मुंबई रणजी छोड़ के गोवा में चला गया खेलने, कि वहां भी उसको चांस. अब वो मेरे को लगता है उसको मुंबई छोड़ना चाहिए और कहीं और पे खेलना चाहिए फ्रेंचाइजी से, अगर उसको खिला ही नहीं रहे. लेकिन एक बात बताओ अंकित, लेकिन एक बात बताओ, उसको बुरा लगा रहेगा ना कि यार मैं इतने टाइम से बेंच पे हूँ, मेरे से पहले वो क्वीना को खिला लिया, क्वीना में वो तो पापा की तरह 12th का एग्जाम भी नहीं दिया है यार. देख यार, आप मेरिट पे खिलाओ यार. उसने किया है परफॉर्म, ऐसा नहीं है कि नहीं किया. लास्ट ईयर भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा था यार. विराट कोहली को यॉर्कर में आउट किया था. तो यार एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए कि नहीं आपको? सबको एक लेफ्ट आर्म सीमर पसंद आता है देखना. यू हैव ऑल द राइट हैंड सीमर्स इफ यू सी इन मुंबई सेटअप. फिर वो कल ट्रेंड बॉल आएगा, बॉल लहराएगा, तो आपको भी चाहिए ना एक बॉल बाहर निकालने वाला. तो आप लाओ अर्जुन टेंडुलकर
यार भाई मेरे को तो चाहिए यार, वो बंदे को खिलाना चाहिए यार, उसको आप सीट गरम करा रहे हो खाली बाहर बैठा के, क्या सीख रहा होगा मेरे को, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, आई फील सैड अबाउट हिम. Great. I think there was too much of an opinion to ask for. And yes, I hope Arjun Tendulkar decides to come and play so that we can again start saying Tendulkar in the stands again. He's a great. Absolutely, yeah. Great. Okay, Krishna, any final thoughts? Rajasthan or Rajasthan or Mumbai Indians? See, you're also saying. Yes, Arjun Tendulkar should play. Yes. यार मछली की खिलाना आंख चाहिए यार, कृष्णा पे यार. नजर रखते हुए Rest Akash अर्जुन. Madhwal. Rest Akash Madhwal. रेस्ट And आकाश get in मधवाल, यस. Rest Arjun. Bumrah. Rest Bumrah. Rest Bumrah. Play Arjun Tendulkar. नहीं नहीं, ऐसा इतना भी नहीं यार, वो होना है, इतना भी भावुक नहीं होना है कि बुमराह कोई रेस्ट करा दो. यार बट या आई जैसे थिंक जैसे ही शुड गेट चांस. जैसे सीएसके में हुआ ना कि गायकवाड इज नाउ द कैप्टन, फिर हार्दिक पांड्या निकल गया तो गुजरात टाइटन, इस तो हार्दिक पांड्या शुड नाउ स्टार्ट ट्रेनिंग अर्जुन तेंदुलकर एज द कैप्टन, तो वो एक बना रहेगा लेगेसी थ्रू आउट. Okay, great. Thank you very much, guys, for joining this podcast. I hope you enjoyed it. Please like, share, and subscribe us on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Have a good night, guys. Thank you very much. Thank you guys, thank you so much.